Who launched a website Modi Story? Mahatma Gandhi's granddaughter Sumitra Gandhi Kulkarni. World Theatre Day 2022 celebrates on 27 March. Earth Hour 2022 celebrates on 26th March, the last Sunday of March month. इसकी थीम थी Shape Our Future. Who won third edition of SAFF Under 18 Women's Football Championship? India. Who won Swiss Open Super 300 Badminton Tournament? PV Sindhu. PM Garib Kalyan Anna Yojana extended till September 2022. Who won COVID Champion Award at Wings India 2022? देखो, कोविड चैंपियन अवार्ड जो मिला है वो मिला है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट जो अवार्ड है वो मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। हु वॉन स्टॉकहोम वाटर प्राइज लिटरेचर 2022? इमेरिटस हाइड्रोलॉजिस्ट विल्फ्रेड ब्रूडसर्ट. Who won the Best Actor at Oscars Award 2022? Will Smith. Name the ship which was presented the prestigious President's Color by President Ramnath Kovind. INS Valsura. According to UNEP report, which is the world's most noise polluted city? Dhaka, Bangladesh. Which state topped Niti Aayog's Export Preparedness Index 2021? Gujarat. RBI Governor Shaktikant Das inaugurated the Reserve Bank Innovation Hub in which city? Bangalore. Which company acquires Neo Bank Avail Finance? Ola. Who has joined the International Strategic Advisory Board of Data and Analytics behemoth Dun and Bradstreet? Former SBI Chairman Rajneesh Kumar. Airport Authority of India has signed an agreement with which institute to develop indigenous air traffic management system? Defense Public Sector Undertaking Bharat Electronics Limited के साथ. Who announced National Dolphin Day will be observed on 5 अक्टूबर? ये किसने अनाउंस किया कि नेशनल डॉल्फिन डे जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा? यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने अनाउंस किया है. हु इनॉग्रेटेड द 3-day नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ईशन मंथन एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इन न्यू दिल्ली? यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर टूरिज्म एंड डोनर जी किशन रेड्डी. हु इनॉग्रेटेड भारत भाग्य विधाता अ 10-day मेगा फेस्टिवल एट रेड फोर्ट इन दिल्ली? यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी. Who inaugurated the 11-day exhibition of Adi Bazaar in Ekta Nagar Kevadia Statue of Unity in Gujarat's Narmada district? Srimati Nimisha Ben Suthar, Minister of State for Tribal Development, Health, Family Welfare and Medical Education, Government of Gujarat. Who has been appointed as advisor in Defense Ministry? Lieutenant General Vinod G. Khandare. NATO extended Secretary General Jens Stoltenberg term by 1 year. Who won Formula 1 2022 Saudi Arabian Grand Prix? Max Verstappen. Name the actor or actress who has been named as one of the awardees of the Time 100 Impact Awards 2022. Deepika Padukone. Baliktan 2022, the largest military exercise ever held between US and Philippines. MRSAM medium range surface to air missile has been developed by DRDO and Israel Aerospace Industries. PVR Limited and Inox Leisure Limited announced the merger of their companies. What will be the new name of the company after merger? PVR Inox Limited. ये PVR जो अलग सिनेमा हॉल है और आइनॉक्स अलग है, तो ये दोनों मर्ज हो रहे हैं. Who launched Learning and Development Center LDC of the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited in Mysuru, Karnataka?
Governor of Reserve Bank of India Shaktikant Das. Who has been appointed as Director General of International Labour Organization? Gilbert Hongbo. Who has become new chairman of Broadcast Audience Research Council? Shashi Sinha. Who took oath as Chief Minister of Goa for the second term? Pramod Sawant. Where has Pradhan Mantri Sangrahalaya, the Museum of Prime Ministers, been built? Teen Murti State, Delhi. Who inaugurates the Indian Jewellery Exposition Centre building in Dubai, UAE? Union Minister of Commerce and Industries Piyush Goyal. Who has been appointed as CEO of FedEx? Raj Subramaniam. Who has been appointed as Director of Forest Research Institute? IFS officer Dr. Renu Singh. Who is the President of Badminton Association of India? Hemant Biswa Sharma. Indian government signed an MOU with which institute to create the Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat? World Health Organization के साथ WHO. Who launched geotagging of payment system touch points? Reserve Bank of India. Who launched Max Life Smart Secure Plus Plan? Max Life Insurance and PhonePe. Who won National Water Awards 2022? फर्स्ट नंबर पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे तमिलनाडु. नेम द कंट्री which is qualified for Qatar 2022 Football World Cup for the first time in 36 years. Canada. Who unveils Fleet Card Fuel on Move, a new initiative for refueling? Indian Air Force with Indian Oil Corporation Limited. What is the rank of India in Hurun Global Under 40 Self-Made Billionaires 2022? फोर्थ रैंक है. Who released a book titled स्फूर्ति प्रभाता श्री सौम्या ऑथर्ड बाय के श्याम प्रसाद? रिलीज किसने की है? रिलीज की है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्टील वेस्ट रोड क्रिएटेड? सूरत, गुजरात. Who launched a book titled Indian Agriculture Towards 2030 Pathways for Enhancing Farmers' Income, Nutritional Security and Sustainable Food and Farms System? ये बुक का नाम है. एक किसने लॉन्च किया? नीति आयोग एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. नेम द प्लेस विच हैज़ बीन इंक्लूडेड द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को. लिविंग रूट ब्रिजेस, मेघालय. A Belgium player, Miguel Van Damme, passes away recently, is related to which sports? Football. Bhim Bahadur Gurung passes away recently. He was the former CM of which state? Sikkim. International Transgender Day of Visibility is observed on 31st March. World Backup Day 2022 is observed on 31st March. International Day of Drug Checking 2022 is observed on 31st March. Who unveils Param Shakti, a petascale supercomputer at IIT Kharagpur? West Bengal Governor Jagdeep Dhankar. Who won the third edition of the BBC Indian Sports Women of the Year Award 2021? Mirabai Chanu. Who tops Duff and Phillips Celebrity Brand Valuation Report 2021? 21 का ध्यान रखना, 2021. विराट कोहली. नेम द स्टेट्स विच हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू रिजोल्व अ बॉर्डर इशू इन 6 डिस्प्यूटेड डिस्ट्रिक्ट. आसाम एंड मेघालय. वेयर हैज़ इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कंक्लूड हुई है, खत्म हो गई है. गोवा इन द अरेबियन सी. अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, what is the revised GDP growth forecast financial year 2022 to 23? 7 से 7.2% तक रहेगी. उड़ीसा और उत्कल दिवस is celebrated on 1st April. Who unveils officially Al Rihla FIFA World Cup Ball for Qatar Tournament 2022? Adidas. बॉल रिवील की है. Who launched Startups Founders Hub platform? Microsoft.
Varuna 2022, a bilateral naval exercise is going to be held between the countries India and France. Vault, a digital customer engagement and rewards program, was launched by HDFC ERGO General Insurance Company. Tap to pay for UPI, a new functionality is launched by Google Pay with Pine Labs. दोनों ने मिलके किया है, Google Pay and Pine Labs. Central Bank of India partners with which institute to launch digitized customer onboarding? Quick ID. Sports Digital Experience Center is launched by Manipur government in collaboration with Samsung Data System India Private Limited and Abhitech IT Solution Private Limited. Who became the chairman of Payments Council of India? Vishwas Patel. Which government launches scheme to offer personal loan for prisoners? Maharashtra government. Which government launched the Vinaya Samarasya Yojana? Karnataka government. Who launched a software named Faster, Fast and Secured Transmission of Electronic Records? Chief Justice of India N.V. Raman. Which is the third hottest place in the world according to EI Dodo weather website? चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे है. चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है कायस जो माली की सिटी है, और सेकंड पे है सेगो, और थर्ड पे है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अप्रैल 2022. थीम थी इसकी इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेट्स ऑन 2 अप्रैल. इसकी थीम है स्टोरी आर विंग्स दैट हेल्प यू सोर एवरी डे. हु लॉन्चेज लोगो, मस्कट, जर्सी एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021. फिर से ध्यान रखना. यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर. अनुराग सिंह ठाकुर ने और गवर्नर ऑफ कर्नाटका टीसी गहलोत. अनुराग सिंह ठाकुर और टीसी गहलोत ने लॉन्च किया है. और अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. ये यूनियन मिनिस्टर है यूथ एंड अफेयर्स के. और कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर. और टीसी गहलोत कौन है? गवर्नर है कर्नाटका के. वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप मेड बाय. इलेक्ट्रिक क्रूज शिप अब ये चाइना ने बना दिया है. विच स्टेट बिकम्स इंडियाज टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर? उत्तर प्रदेश. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? डॉक्टर एस राजू. Name the Indian who has been selected as Vice Chairman of prestigious International Telecommunication Union Council Standing Committee. Miss अपराजिता शर्मा जो कि IP and TAF सर्विस ऑफिसर है. Which bank will acquire Citibank's India consumer business? Axis Bank. Center has extended foreign trade policy. कौन सी पॉलिसी? जो 2015 से 2020 तक होनी थी, उस पॉलिसी को एक्सटेंड किया है सेंटर ने. कब तक? 30 सितंबर 2022. कोविड की वजह से ये एक्सटेंड किए जा रहे हैं. नेम द स्टेट विच विल बी होस्टिंग द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022. मेघालय.